लगाव की बुलंद से है. Today I am going to start the preparation of the vermicompost and different aspects of the vermicomposting. Vermicompost, first of all, welcome to all of you. Listen me. Yes, it is. Welcome. Vermicompost is the gold of garbage. This is called as a queen of compost. Vermicompost nutrient content: organic carbon 9.15% to 17.98%, total nitrogen 3%, total phosphorus 1%, and total potassium 1.5%. And other nutrients also contain calcium, magnesium, potassium, sulfur. Even oxygen hormones is also contained. Oxygen, gibberellin and different types of the hormones, जो growth hormones हैं, वो भी जो है इसमें पाए जाते हैं. तो अगर यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द जो है वर्मीकंपोस्टिंग एंड farmyard manure and bacterial compost means enriched compost. Nitrogen 3%, vermicompost having the nitrogen 3%, farmyard manure 0.5%, and bacterial compost means rich in azotobacter, rich in azospirillum, rich in other mycorrhiza and other microorganisms also be used. NPK consortia, zinc mobilizing bacteria, so different types bacteria and microorganisms also be used to enrich the compost today. I am working in more than 10 units here. Vermicompost having the 3% nitrogen, farmyard 0.5%, and bacterial compost 1.2 to 1.5%. Phosphorus 1%. Farmyard manure 0.25% and bacterial compost 0.7 to 0.9%. Potassium also reach 1.5, 0.5 and 0.6. So it is a comparative study of the vermicompost, farmyard manures and the bacterial compost. Here the vermicompost is rich in 6 times more nitrogen as compared to the farmyard manure. 4 times more जो है phosphorus as compared to the farmyard manure, and 6 times more in potassium content, and other nutrients also be contained. Mostly some terms are used in vermicomposting: vermicomposting, vermiculture, and vermiculture technology. You know, vermicomposting is a method of making compost with the use of the earthworm, which generally live in the soil, eat biomass, and excrete in the digested form. This compost is generally called as a vermicompost. Vermicompost means the formation of the process of the making the vermicompost. It's called as a vermicomposting. Here the term use the vermiculture. Vermiculture means scientific methods of breeding and raising earthworm in controlled conditions. Generally, China and other countries also be used vermiculture to prepare different types of the dishes also. Just like in India, use the chow mein. Worm also be used in China as a food. Vermiculture. Vermiculture technology. Vermiculture technology is the combination of the both vermicomposting and vermiculture. Both technology is collectively called as a vermiculture technology. Again, I am going to discuss the earthworm can be used in the following area: for the development of the arable soil, turnover of the soils,
आप जानते हैं कि केचुए को किसान का मित्र, किसान का हलवाहा कहा जाता था, क्योंकि ये टर्निंग करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिक मैटर, एरेशन एंड ड्रेनेज. Different types of work are conducted by the worm in field condition for production of the useful products like vermi fertilizer, vermi tissues, vermi feeds, vermi wash, and other different types of the product also be prepared. Use of the worm in compost for maintenance of the environmental quality and monitoring of the environment for the soil fertility. Organic and heavy metals, non-biodegradable toxic materials, pollution. Presently, the modern agriculture polluted the whole environment. Whole environment means biosphere, atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. All are polluted by the chemical fertilizers. But here the save the environment, prepare the compost by use of the worm. Type of the earthworm. I am going to discuss the phylum Annelida of the animal kingdom. They are the long and cylindrical, having the large numbers of the growths. There are about 3,000 species of the earthworm in the world, but in India, only 3,000 species have been identified in India. Although these worms are hermaphrodite, to mature, earthworms are required to propagate or breed. Both having male and female, both organs are same species. That is called as a hermaphrodite. At the time of the egg laying, the skeletal lump is transformed into the hard griddle-like capsules called as a cocoon. Setting of the cocoon ranging from the 1 to 5, only a few of them survive and hatches. The small worm is called as a juvenile, and again formation of the cocoon or period of the 50 to 60 days required to hatching. Cocoon to juvenile phase. Normally the average lifespan of the earthworm is 1 to 10 years. There are two types of the species are found in earth. First is a epigenic. Epigenic means surface feeding. Mostly exotic species are epigenic and indigenous species are exogenic or epigenic. Epigenic surface feeder, Icenia fotida and Udrilus usini. These are a basic species used in India. These are a fast grower, fast feeder. Basically, जो इंडिजिनस वैरायटी हैं और जो एक्सोटिक वैरायटी हैं, इंडिजिनस वैरायटी feed 70% soil and 30% organic matter, but reverse condition in exotic variety. Exotic variety feed 70% organic matter and 30% soil. So these are a difference between the exotic and indigenous variety in feeding condition. Icenia fotida and Udrilus usini are exotic variety worm are basically used in India for preparation of the vermicompost. Epensic are a
feeders on leaf lighter, mean different types of the leaf and soils at upper layer of the soil. But others, the surface feeders basically use organic matter. Both epigenic and apensic are cylindrical, sorters in the length, and red and dark brown. Basically, 0 to 40 degrees centigrade, and but optimum temperature required to rear 20 to 30 degrees centigrade. These are a Icenia fotida species. These are a Eutrylus usini species. Both are a active worm, and these are a Icenia fotida cocoons. Just like egg, these are a small juvenile are inside the cocoon. Hatching of the cocoon, these are a Icenia fotida in four stage: cocoon stage and juvenile stage. Mechanism of the vermicomposting: materials consumed by the worm undergo physical breakdowns in the gizzard. These are part of the gut, resulting in the particles less than 2 microns, giving thereby an enhanced surface area for the microbial processing. Again, this finally ground material is exposed to protease, lipase, amylase, cellulase, and citinase. There are so many enzymes are secreted into the lumen by the gut wall and associated microbes. Different types of the microbes having inside the gut, and different types of the enzyme having the gut, protease, lipase, amylase. Only 5 to 10% of the indigested materials is absorbed into the tissues of the worm for their growth, and rest is excreted as cast. It is also rich in different types of the nutrients. Preparation of the vermicompost method: basic raw materials, any organic materials generally in form like paddy straw, wheat straw, pulses straw, and leaf fall, different type plant leaves are used, but pine materials is not used. Horse dogs, due to the risk of the tetanus virus, horse dog not used. These are lethal to the human beings. It is not advised to be used in feeding materials for the earthworm. Different types of the ducts like cow ducts, poultry manure, poultry beds, and different types of the materials, organic materials used, but horse ducts is not used due to the risk in the tetanus virus, lethal to human health. These are not used. Starter, cow dung, biogas, slurry, or urine of the cattle. Urine of the cattle reach the basic primary nutrient content. Generally, if you use the leaf and ducts mixtures, the nutrient content
also be increased, but only use the cow dung, buffalo dung, cattle dung, या poultry dung. The nutrient content is less than use of the leaf. So best vermicompost preparation prepare having use the leaf and biogas slurry also. Soil animals, earthworm, Icenia fotida, and Utilus usually basically use in prepare the vermicompost. These are different types of the structure: square type structure, rectangular type structure. Different types of structure are prepared. Structure depend upon the materials available in the farm or available in the home, yeah, available in the place. Square type structure and rectangular type structure basically use. These are a structure use plastic structure, fiber structure, cemented structure, brick filled structure. The different type materials are used to prepare the different types of the structure, depend upon the materials present in the place. These are a set. If you can going the commercial scale production of the vermicompost, prepare the plastic set with the use of the iron sticks, iron, and different types of the structure are prepared. Different, these are a raw material available in the home, available in the farm. Use low cost materials. Favorable conditions of the earthworm. pH. The first favorable condition, pH. Range between 6.5 to 7.5 means neutral pH is required to grow worm. More than 7.5 pH is lethal to the worm, and less than 6.5 pH means acidic pH is also lethal to the worm. It is not survive well in this condition. Moisture 60 to 75% of the moisture. Below and above range, mortality of the worm taking place. Then next, aeration, 50% aeration for the total pore space is required to grow well, and optimum condition for growing of the worm. Temperature range between 18 to 35 degrees centigrade. So these are a best. Less than 18 degrees centigrade, breeding and growth affected. More than 35 degrees centigrade, it is not suitable for growth and development of the worm. These are a low cost structure for poor farmer. Prepare the use of the bricks and makes the vermicompost use of the farm material, and kitchen based material also be used. Procedure. It is a mostly prepared in either pit or heap method. Both methods are used in India. The dimensions of the either heap or pit are 10 into 4 into 2 feet. Means length 10 feet, width 4 feet, and height and depth 2 feet. The length and width can be increased or decreased depending on the availability of the materials in the place, but not the depth, because the earthworm cavity is confined 2 feet depth only.
आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है, मीन्स जो डेप्थ है, वो 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द select a site which is not under any economic use and is shady and there is a no water stagnation. The site should be near to a water sources. So there are a basic requirement. First of all, no water stagnation, जल भराव नहीं होना चाहिए। The site should be near the water source, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। Other shady conditions, आप देखते होंगे कि फार्म में जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है, केचुए की जो मोर्टेलिटी है वो चूंकि काफी सॉफ्ट होता है और मरने लगता है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना जाए। फर्स्ट लेयर बेडिंग मटेरियल्स ऑफ द वन थिंग्स विद सॉफ्ट लीव्स, आप यहाँ पे नीम की पत्तियां यूज कर सकते हैं, यूज एज अ डायरेक्टेड इंडिका लीव्स, कोनगैमिया पिन्नाटा मीन्स करंज लीफ, या किसी भी प्रकार की जो पत्तियां हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है कि अगर हम बेडिंग में यूज कर रहे हैं तो नीम की पत्ती सबसे बेस्ट होती है। 2 से 5 सेंटीमीटर अगर हम लेयर जो है उसकी डालते हैं नीचे, तो डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो जो है नहीं आते हैं उसमें। सेकेंड अगर हम लेयर की बात करते हैं तो सेकेंड लेयर 9 इंच, फर्स्ट लेयर जो है 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सेकेंड लेयर 9 इंच थिक ऑर्गेनिक रेजिड्यू लेयर, फाइनली चैफेड मटेरियल लेस देन 2 माइक्रोन, मतलब छोटा छोटा जो चैफेड मटेरियल है, कटा हुआ मटेरियल है, उसका जो है यूज करते हैं। थर्ड लेयर डक्स, काउ डक या कैटल डक, कोई भी डक हो सकती है, गोबर हो सकता है, प्लस वाटर इक्वल मिक्सचर। अगर हम 50% मतलब 50% डक्स और 50% वाटर का मिक्सचर आफ्टर जो है 2 इंच लेयर। अगर हम नेक्स्ट अगर जाते हैं तो कंटिन्यू टू द लेयर अप टू द पाइल, जब तक के बस वही हम कंटिन्यू जो प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही लेयर जो है, जो सेकंड लेयर है तो उसी प्रकार से हम थर्ड करते हैं, फिर फोर्थ करते हैं, उसी प्रकार से हम ऊपर तक भरते रहते हैं उसको। तो कंटिन्यू द लेयर्स अप टू द पाइल्स टू ग्राउंड लेवल in the case of the pit methods up to 2 feet in the heap or surface bed method. Next, protect the worm against the natural enemies like ants, lizards, snakes, frogs, toads, different type के जो ये हैं predators हैं। आप जानते हैं कि प्रेडेटर्स हैं, जैसे चींटी है, लिजार्ड है, सांप, सर्प है और मेढक है, तो इनसे जो है बचा के रखना, क्योंकि ये तुरंत ही जो है उसको खा जाते हैं, मीन्स ये प्रेडेटर्स हैं इसके। मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर बाय टर्निंग ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टॉकिंग। मॉइस्चर 60 to 70% मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। और जब मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो साइड में हम एक पॉट्स भी रख देंगे, या एक जो है पक्का जो है तो पॉट्स बना देंगे, जिसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एज ए वर्मी वाश के रूप में जाकर के इकट्ठा होगा, और उसको छान करके, उसको मतलब सीप लेकर के छान करके, और उसको एज ए टॉनिक यूज कर सकते हैं प्लांट पे।
हम यहाँ पे काफी मतलब हमारा काफी बड़ा फार्म है, हम यूज करते हैं. At the day of the 24th to 400 worms are introduced in the two pit. 1 meter square required 2000 swarm. Generally 1 kg worms having 1000 worm. 1 meter square required 2000 swarm. Without disturbing the pit by regular watering, the entire raw materials will be turned into the vermicompost in the form of excreta. So there are a basic requirement means 2000 swarm requires 1 meter square. The turnover of the compost is 75%. The total materials 100 pit is 1000 kg. The out turn will be 750 kg. There are a low cost structure, use only bricks and paddy straw and some other materials to prepare. Harvesting of the vermicompost from the pit. The basic requirement is stop the watering. These are first of all, stop the watering before 1 week after harvest. If you can going to harvest the vermicompost, watering must be stopped before 1 week. Sometimes the worm is spread across the pit, comes in the clothes and penetrate each other in the form of ball in 2 or 3 locations. Keep the compost by removing the balls and place them as a bucket. Top layer has the disturbed manually. Earthworm move the downward and compost is separated. Basically, generally, earthworm move the downward. The surface materials removed and earthworm are going to downward. The materials is a sieved in 2 mm sieve. 2 mm की जो sieve चलनी होती है या चलना होता है उसे हम छान लेते हैं. The materials passed through the sieve is called as a vermicompost. जो भी मटेरियल इससे पास होता है उसे हम वर्मीकंपोस्ट कहते हैं. जस्ट लाइक चाय की पत्ती की तरह होता है. कुछ चीजें स्टोरेड इन द पॉलीथीन बैग, क्योंकि पॉलीथीन बैग में इसलिए रखते हैं जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट लॉसेस ना हो, अन्यथा वोलेटिलाइजेशन लॉसेस बहुत ज्यादा इसका होता है. तो पॉलीथीन में रखने से वोलेटिलाइजेशन लॉसेस जो है नहीं होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं, मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आता है. Recomposting is done in the same pit or bed. The similar to the above described pit keep methods. Vermicompost can be prepared in wooden box, brick, columns, and similar way. Recomposting also be if साइड में अगर जो कंपोस्ट बन रही है उसके साइड में अगर हम रॉ मटेरियल को डाल देते हैं तो जो केचुए हैं, वो जो वर्म हैं, वो उसमें से निकल करके और वो नए रॉ मटेरियल में पहुंच जाते हैं. जनरली ये देखा गया है और उसको हम आराम से जो है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. In situ vermicomposting can be done by the direct feed. You can also go to prepare the in situ. There are 2 methods of the composting, ex situ methods and in situ methods.
इन situ means same place. ex situ means ex situ means materials taken from other place. In situ composting can be done by the direct field. जहां पर हमें यूज करना है वहीं पर हम पूरे फील्ड में इन situ जो है तो कर लेते हैं, जिससे कि पूरे खेत में ही वर्मी कंपोस्ट बन जाए. एप्लीकेशन ऑफ द वर्मी कंपोस्ट जनरली at 5 ton per hectare. If can go the on the basis of nitrogen, 3% nitrogen have the vermicompost and 0.5% nitrogen have the farmyard manure. If you can replace the farmyard manure by the vermicompost, you can use 1/6. 1/6 the time less. अगर हम 6 किलो अगर यूज करते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर को, तो हम वहां पर हम 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं. जनरली 5 टन पर हेक्टेयर फॉलोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द काउ डंग 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर. अगर हम 5 टन पर हेक्टेयर यूज कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो ये अलग अलग है सबके लिए डोज. वेजिटेबल क्रॉप के लिए अलग है, सीरियल क्रॉप के लिए अलग है, फ्रूट क्रॉप्स के लिए अलग है. तो लेयर्स ऑफ द ओलेबल्स आर द बेस्ट about the 15 centimeter thick. Irrigation should be done at the intervals of the 15 days. हर 15 दिन पे जो है इरिगेशन आवश्यक होता है. वर्मी कंपोस्ट also be increase the different types of the microbes in the soil. Basically, you know about the application of the phosphorus in 100 kg. Only 3 to 20 kg phosphorus used by the plant, and rest amount 80 kg phosphorus fixed as a tricalcium phosphate, dicalcium phosphate. If the pH is less than 6.5, the phosphorus fixed as a iron phosphates, manganese phosphates, aluminum phosphates. These are not used to plant. If 100% 100 kg use the phosphorus, only 3 to 20% 20 kg phosphorus use efficiency. But if can go the use of the vermicompost, the different types of the microbes, because microbes are increased in the soil, because organic matter is the feed of the microbes. Vermicompost use and increase the microbes population means phosphorus solubilizing bacteria, zinc mobilizing bacteria, zinc solubilizing bacteria, potassium solubilizing bacteria, nitrogen fixation bacteria, or microorganism. Different types of the beneficial microbes are increased in the soil. So these are the best option of the organic farming, use of the vermicompost. Best option of the natural farming means cultivation of the microbes in the soil. Vermicompost at the 5 ton per hectare use increase the health of the soil. Then as well as maintain the sustainability of the soil. Next, sieving. These are a sieving conducted by the farmer. Vermi weights, vermicompost. These are a prepared vermicompost going to the market. These are a packing. Attractive packing attract the buyers. So packing, grading, packing, marketing, management is also be important. Precautions, I am going to discuss in precautions. Do not cover vermicompost bed
heap with plastic sheets because it may trap heat and gases. You know, the greenhouse gases increase also plastic sheets. Means black polythene is more lethal as compared to white. अगर हम ब्लैक पॉलीथीन का यूज करते हैं तो जनरली इन्वायरमेंट की तुलना में 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसके नीचे ज्यादा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि सॉइल सोलराइजेशन या उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कभी भी जो है हम प्लास्टिक शीट्स को जो है कवर नहीं करेंगे उससे, अन्यथा की स्थिति में हाई टेम्परेचर होगा और जो केचुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, एरेशन नहीं हो पाएगा प्लास्टिक शीट से, तो ड्यू टू लक ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि वो भी जीव है, लक ऑफ द ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएंगे। डू नॉट ओवरलोड द वर्मी कंपोस्ट हीप टू अवॉइड हाई टेम्परेचर that adversely affect their population. Means 3 फीट से कभी भी ज्यादा गहरा, 2 फीट से कभी भी गहरा गड्ढा नहीं रहना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ओवरलोड हो जाएगा मटेरियल्स और जो केचुए हैं वो मरने लगेंगे। इसीलिए जो उसकी जो डेप्थ है वो 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ है वो हमेशा ही 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डू नॉट ओवरलोड द वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है ड्राई कंडीशंस किल द वर्म एंड वाटर लॉगिंग ड्राइव देयर वे। हैचिंग शुड बी डन डेली इन समर एंड योरी हर डे रेनी एंड विंटर सीजन। Addition of the higher quantities of the acid-rich substances such as tomatoes and citrus waste material should be avoided because verb required neutral pH. pH उसको 6.5 to 7.5 मीन्स न्यूट्रल pH चाहिए, उदासीन pH। अगर हम उसमें एसिडिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि नींबू का छिलका है या नींबू का मटेरियल्स है या उसका रस निकालने के बाद जो बचता है वेस्ट मटेरियल्स उसको यूज करते हैं, या टोमेटो यूज करते हैं, सड़े हुए टोमेटो डाल देते हैं, तो उससे जो केचुए हैं वो मरने लगते हैं। तो डू नॉट यूज द एसिडिक मटेरियल्स। मेक ए ड्रेनेज चैनल्स अराउंड द हीट to avoid the stagnation of the water, particularly in the high rainfall area in the rainy season. जहां पर भी मतलब मीन्स जो ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए, जो हिप है उसके चारों ओर जो है नाली हो, जिससे कि पानी जो है वो आसानी से निकल जाए। वाटर स्टेगनेशन लीथल है। Organic material used for the composting should be free from non-degradable material such as stones, glasses pieces, plastics, ceramic items, test tubes। मीन्स कांच का जो मटेरियल्स है और सिरेमिक जो आइटम्स है, तो या नॉन डाइजेस्टेबल जो मटेरियल्स है, आयरन वगैरह के जो होते हैं, तो इनका यूज नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। डाइजेस्टिव जो मटेरियल है वही यूज करना चाहिए, जैसे फार्म वीड्स हैं, फार्म रॉ मटेरियल्स है, लाइक जो है वेस्ट मटेरियल्स है। बेस्ट होता है प्रोटीन रिच मटेरियल्स लाइक पल्सेस। Natural enemies and their control. Different types of the natural enemies also be affected the growth and developments of the worm, like ants, termites, centipedes, rats, pigs,
bird, frogs, different types of the enemies are affected to worm. Next, preventive measures include the treating of the site with a 4% neem-based insecticide before filling the heap. 4% neem-based insecticide use or neem leaf 2 centimeters used in pits. Transport of the live materials. Live earthworms can be packets with the moist feed substances in the container, cardboard, plastic, in the provision of the aeration. जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका केचुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, तो जो मटेरियल्स है उसके साथ ले जाते हैं, और कार्डबोर्ड या प्लास्टिक्स जो भी हैं तो कम से कम उसमें जो हम ले जाते हैं तो उसमें छेद होने चाहिए, होल्स कर होने चाहिए, जिससे कि एरेशन है जो वो प्रॉपर है होता रहे। दूसरा है कि कम से कम 50% जो वर्म है वो वर्म और 50% जो आर्गनिक मटेरियल है जिसमें वो रह रहे हैं उसके साथ उनको जो है ले जाया जाए। अदरवाइज मोर्टेलिटी शुड बी इंक्रीज। फीड सब्सटेंसेस क्वांटिटी should be regularly 0.5 to 1.5 ग्राम पर इंडिविजुअल्स। एक केचुआ 24 आवर में 24 घंटे में 1 ग्राम के करीब जो है एवरेज अगर हम देखें तो 1 ग्राम जो है ये फीडिंग करता है। इसीलिए अगर हम कितना मटेरियल डाल रहे हैं तो उस हिसाब से हम उसको उसमें जो है वर्म डालेंगे उस मटेरियल में। जनरली 2000 worm is required to 1 meter square. Culture should contain cocoons, juveniles and adult. There are all types of the culture, all types of the materials contained in culture, cocoon, juveniles and adult. Because sometimes adult do not acclimatize to new environment and may even die. Under such circumstances, cocoons are helpful to increase the population or population building up of the earthworm. हम तीनों को एक साथ जो है ले जा सकते हैं, कोकोन्स को ले सकते हैं, जो जेवनाइल्स मीन्स छोटे बच्चे हैं उनको ले जा सकते हैं, जो एडल्ट हैं उनको भी ले लें, क्योंकि कभी कभी जो सो एडल्ट है वो सर्वाइव नहीं करते हैं तो उसके स्थान पे जेवनाइल, अगर जेवनाइल सर्वाइव नहीं करते हैं तो ये 100% श्योर है कि कोकोन्स जो है वो धीरे धीरे करके मतलब एक जो एडाप्टेशन है वहाँ उस इन्वायरमेंट में उनका हो जाता है। तो क्योंकि वो छोटे पर से जैसे निकलते हैं वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मीन्स एडॉप्शन, तो वो स्ट्रगल करके और एडॉप्ट हो जाते हैं वो नए इन्वायरमेंट में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोकून और एडल्ट, जुवेनाइल है ठीक है, नहीं तो कोकून और एडल्ट एक साथ जो है ले जाएं, जिससे कि अगर एडल्ट वहां पर जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो वहां पे कोकून आराम से सर्वाइव कर जाएंगे धीरे धीरे। एप्लीकेशन रेट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अप्लाई। एप्लीकेशन रेट मीन्स पॉट्स में कितना डालें। जनरली अगर 10 इंच का पॉट्स है कोई प्लांट तो उसमें हम 200 ग्राम जो है डालेंगे। अगर 12 इंच का पॉट्स है कोई प्लांट लगा हुआ है तो उसमें हम 300 ग्राम डालेंगे। अगर 9 इंच का पॉट्स है तो उसमें हम 200 ग्राम डालेंगे। तो ये निर्भर करता है कि कौन सा प्लांट है और उनका पॉट्स का साइज क्या है। जनरली शहरों में पूछा जाता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें हम कितनी वर्मी कंपोस्ट डालें, तो ये करना है। लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 6 किलोग्राम अगर उसकी रिक्वायरमेंट है फार्म यार्ड मैन्यूर की तो हम 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट उसमें डालेंगे बेस नाइट्रोजन बेस पे। तो फील्ड क्रॉप्स 5 to 6 टन पर हेक्टेयर, वेजिटेबल्स 10 to 12 टन पर हेक्टेयर, फ्लावर्स प्लांट्स 100 to 200 ग्राम पर स्क्वायर फीट,
और फ्रूट प्लांट्स 5 to 10 kg per tree. तो next discuss in advantage of the vermicompost. Vermicompost is a rich source of the nutrients, means storehouse of the nutrients, vitamins, enzymes, antibiotics, and growth hormones, gibberellin, auxin, cytokinin, and different types of the hormones contain the vermicompost. And different types of the anti-pesticide properties also be contained in vermicompost. So it give disease resistance to the plants. Nutrient content of the vermicompost is higher than the traditional compost. It is a valuable soil amendment. Means ये vermicompost मृदा सुधार भी करता है. Vermicompost harbors certain microbial population that help in the nitrogen fixation, means azotobacters, azospirillum, Frankia, and different types of the microbes are found in the soil. Phosphorus-solubilizing bacteria, phosphorus-solubilizing microorganism, different types of the microbes. Means vermicompost is the food of the worm, food of the microbes. The microbes population increase the organic matter content in the soil. You know about the soil having the less than 0.5%, the microbe population less. The medium content means 0.5 to 0.75, which must be contained soil. Then the microbes population also be increased. Means the organic matter content is increase the fertility level, increase the microbial population. Its application enhance nodulation in the legumes. Because vermicompost having the rich in iron and molybdenum. The nitrogenase enzyme is made up of MOFE protein. So increase the nitrogenase enzyme, increase the NIF gene, increase the azotobacter population, increase the rhizobium population, increase the nodulation. Symbiotic microbial association with roots. Superiority of the vermicompost over other synthetic growth media is more pronounced in plant nurseries. It can be used to the rooting medium for the establishment of the sampling in the nursery. Increase the, because in case of the rooting or new make the new plants, rooting, cutting, and other propagation methods used in the plants, vermicompost is the best option to provide the foods, to provide the auxin content, to provide the gibberellin content. The rooting also be increased. It is improved to test, lecture, and keeping the quality of the product. It has immobilized. आप देखे होंगे कि अगर हम सब्जियां लाते हैं और वो दूसरे दिन ही खराब होने लगती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं उनमें टेस्ट भी होता है, उनमें सुगंध भी होती है, और साथ में उनकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो उनको हम 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक रखते हैं, तब भी वो उतनी जल्दी जो है नहीं सड़ती हैं.
और कीपिंग क्वालिटी भी उनकी ज्यादा होती है। तो इट हैज इमोबिलाइज्ड द एंजाइम लाइक प्रोटीएज, lipase, amylase, cellulase, and citinate. Different types of the enzyme are immobilized in the soil. It does not have foul odor as associated with the manures. अगर हम इसको मैन्यूर्स के साथ यूज करते हैं तो किसी भी मतलब जो ऑर्डर मीन्स किसी भी प्रकार की जो सुगंध है वो अच्छी सुगंध ही आती है, कभी भी उसको खराब नहीं करता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।